Good afternoon, students. Warm welcome to one and all. And it's already 2:24. Dear students, kindly come in time and turn off your mic. Dear students, as you know that we were discussing the concept of entrepreneurship development, and in our various classes and various previous lectures, we discussed various components of ED. So, if you have further queries about that, you may turn on your mic and ask something, or you may also write down it chat box. If you better turn off your mic, turn off your mic जिन्होंने अपने माइक ऑन किए हुए हैं वो टर्न ऑफ कीजिए. So, warm welcome to one and all present here. So, dear students, we were discussing the concept of entrepreneurship and development. So, जो entrepreneur और manager में क्या फर्क होता है? अगर हम पहले बात करें, what is the difference between entrepreneur and manager? For sake of your convenience, because you know that I usually speak English. So, if if you are unable to understand my wordings, you may just uh, you may just click on right screen, and here there is the option of turn on captions, and you may turn on captions. Whatever I will speak in English, it will automatically written here. So again, I am saying, if you are unable to understand what I am saying, you may just turn on your caption at the right end. There are three dots in your screen, and after clicking on these three dots, there are four options. One is in call messages, second share screen, third turn on captions. So you may click on the turn on captions. Whatever I will speak here, it will automatically written here. This is the one of the main feature in Google Meeting. And hope in next classes will be conducted through Microsoft Office team. Yet I am discussing on it. So dear students, entrepreneur and manager, what is the difference between these two persons? You know, कि entrepreneur is a self-employed person. Everybody know that doing your own business is much better for in as be a person from other business, and a manager is a salaried person. This is the basic difference between these two. A businessman is self-employed. He is responsible for on working, as you know that you studied plus one business studies, and while a manager is a salaried person. So dear students, if I go through the short term definition of entrepreneur, an entrepreneur is an individual who, rather than working as an employee, founds and runs a small business. Uh, Rather than working as an employee, he's an individual, and an entrepreneur is an individual who, rather than working as an employee, founds and run a small business, assuming all the risk and rewards of the venture. The entrepreneur is commonly seen as an innovator, a source of new ideas, goods, services, and business for procedures. Entrepreneurs play a key role in an economy. Yeah, in any economy, they play a key role. These are the people who have the skills and initiative necessary to anticipate current and future needs and bring good new ideas to market. Dear students, we discussed all the various components of entrepreneurs in our previous lecture, and I think we have completed 3 units. Although I hope you made your assignment of unit 1 and unit 2, and in coming days you will get your remaining assignments on unit 3 and unit 4. And many of you did your MST too, and it was really surprised to know that many people just copied paste it from internet, and no issue. But in your final exams, you will be little bit get distracted, because if you are unaware about the basics, you can't be eligible for it. Manpreet Kaur Pita, kindly come in time, and you know that your class is already at 2:15 p.m. and it's already about 2:40. So
I didn't know why you people are coming so late in every class. But be regular. If I will just display your attendance, many of you haven't crossed 50%. Rare peoples are above 50% who attend classes regularly. Dear students, regularly classes, it's more beneficial for you. So we were discussing the entrepreneurship. Entrepreneurs plays a key role in an economy. These are the people who have the skills and initiative necessary to anticipate current and future needs and bring good new ideas to market. Entrepreneurs who prove to be successful in taking on the risks of a startup are rewarded with profits, fame, and continued growth opportunities. Those who fail suffer losses and become less prevalent in the market. So, if we know about the characteristics of an entrepreneur, uh, yeah, I was talking to a person in this chat box. He wants to be a policeman, and after listening his thoughts, I was really very impressed. The person is studying to really studying along with his college classes. I would like to say him just to be a creative, passionate, motivated, optimistic, future oriented, persuasive, flexible, resourceful, adventurous, and decisive. Because these are the things, whatever we see in a newly creative persons. Also, these are the some characteristics of entrepreneurs. Entrepreneurs are creative. A businessman, in your every sphere of life, you use various types of products. All the products comes from factory, and before the factory it was an idea of the entrepreneur that this product must be exit in the market. Without this idea, the mobile phone that is in your hand, this is the idea of some people. Some person has invented this idea ki a mobile phone must be there, a camera must be there. I am just talking with you with the help of Google Meet. Before 5 to 6 years, when there was a single chalk and talk method, and you will be you will laugh. So, what is the method? Chalk and talk. Again, I am repeating, chalk and talk method. Uh, in this method, usually teacher with the help of chalk just talk in the classroom, and you know that the coming time has been changed, and टेक्नोलॉजी हैज बीन अराइजिंग. एलजी एलजी का हमने क्या देखा था कि भाई एलजी अपने टाइम पे बहुत जानी मानी कंपनी थी. बट क्या हुआ कि एलजी ने ही सबसे पहले अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए थे इंडिया में. बट आज एलजी के फोनों को कोई पूछता भी नहीं है. वाई? क्यों नहीं पूछता प्यारे बच्चों? बिकॉज वट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? ये रीजन इसलिए है कि वो टेक्नोलॉजीज के साथ अपग्रेड नहीं हुए. दे डिडंट चेंज देयर टैक्टिक्स, दे डिडंट चेंज टेक्नोलॉजीज. Due to network problem, I think meeting has been closed. I would like to further state that कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्रिएटिव होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, एंड उसमें एक विजन होना चाहिए. विजन किस सेंस का? विजन होना चाहिए नई टेक्निक को बनाने का. विजन होना चाहिए नए प्रोडक्ट्स को समझने का. Your class was just discontinued due to network issue. We were discussing about why I am being sharing this twice. The issue. So we were discussing the characteristics of entrepreneurs. They are creative, passionate, motivated, optimistic. They are future oriented, persuasive. They are flexible. They are resourceful. They are adventurous. They are decisive. And in our previous classes, we also discussed entrepreneurship development. Entrepreneurship development is the overall development of the entrepreneur. In your MSTs, you are also did with these questions. MST. I think there is a network issue, so it may be little bit distracting us because here weather is really too much bad.
So that's why a little bit network problem is there, so you are unable to understand what I'm saying, and distraction of my sound. But yet I am trying to sharing it. I am trying to make it more flexible. So what is the need for entrepreneurship development? Firstly, it creates employment opportunities. Firstly is creation of employment opportunities. Then second need is capital formation. Then balanced regional development, use of local resources, improvement in per capita income, improvement in the standard of living, economic interdependence, preventing industrial slums, reducing social tension, facilitating overall development. So these are the some various need for entrepreneurship development. Firstly, creation of employment opportunities, capital formation, balanced regional development, use of local resources, improvement in per capita income, improvement in the standard of living, economic independence, and reducing social tension. So, if we talking about the entrepreneurship development process, we also did this in our classroom. I'm just giving you a revision because after a few days you are going to give your final term examination. Many of the issues are there. Ki it may be online, but yet online doesn't mean that ki you just copy it from any source and just paste it in your answer notebooks books. It's not a good matter. Dear students, you must be more practical tomorrow when you will give your examination. And one thing I would like to suggest you, one thing I would like to suggest you that just try for SBI clerical examination. प्यारे बच्चों, क्लर्क का पेपर निकला है, एसबीआई के क्लर्क का. वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन अभी मांगते तो नहीं है, मतलब कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी उसका अप्लाई कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि पूरे साल वो पेपर चलेगा. तब तक तो आई थिंक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा फाइनल ईयर का, जब तक उनकी अपॉइंटमेंट्स होगी. बट अगर नहीं कर पाए तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई एग्जाम तो आपको देना ही पड़ना. इसलिए बोल रहा हूँ कि रट्टेबाजी से काम नहीं चलता. यू मस्ट जस्ट फोकस ऑन योर ओन थिंकिंग. एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस है. क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले आपके पास एक डिस्कवरी होती है कि यार एक नई चीज मार्केट में होनी चाहिए. अब जूम पे बात करें, हम पहले जूम जूम बहुत होता था. आपने भी ऑनलाइन, पहली ऑनलाइन क्लास आपने किस चीज पे लगाई? अगर मैं आपसे पूछूं, परविंदर सिंह, पहली ऑनलाइन क्लास क्लास आप जूम पे. मनप्रीत, आपने कहाँ लगाई थी पहली क्लास अपनी? जूम पे लगाई होगी मैक्सिमम ने. तो जूम के बाद फिर क्या हुआ? आपने अपीयर नहीं सुना होगा. आपने फिर गूगल मीट आया धीरे 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 धीरे, और गूगल मीट का क्रेज भी अपना रहा. गूगल मीटिंग का क्रेज इसलिए रहा कि जूम की कुछ खामियां थी. जूम की कुछ खामियां थी कि 40 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाता था. आपको परचेज आपको परचेज वर्जन इसका लेना पड़ता था. Then afterwards, the person who joined Health and Life TV, who is he or she? Just write down your name properly in chat. Good afternoon. Good afternoon, Anmol. Anmol, Health and um, Health and Life TV. सो अब गूगल मीटिंग का क्रेज हुआ. गूगल मीटिंग में लोग ज्यादा से ज्यादा वो कर रहे हैं कि नहीं यार, एक तो इसमें यू नो कि वन ऑप्शन है कि इसमें ऑलरेडी वट एवर यू विल स्पीक इन इंग्लिश इट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न हियर. ऑप्शन ऑफ स्क्रीन शेयरिंग इज मस्ट, बट इट्स नॉट गुड एज कंपेयर टू जूम. फिर आजकल नया क्रेज चल रहा है ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टीम का. बिकॉज जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टीम है, इसका क्रेज ये है कि इट्स ऑलरेडी वर्क इन इंटरनेशनल सोर्सेज पे चलता है. एक सिस्को वेबनेक्स है. तो अब आपको यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज
automatically lectures has been recorded there, so students who missed the lectures can rejoin it, understand it, grasp it, or through the zeal and enthusiasm they just studied from various sources properly. So dear students, it's all about a discovery. Why discovery? Because there is a shortage of resources in previous thing. A phone in your hand, कितने इसके नए नए वर्जन आए उन्हें. Why a single version haven't all the features? एक मोबाइल फोन है, कभी उस पर 6 MP का कैमरा डाल देते हैं, कभी 12 का, कभी फ्रंट कैमरा डाल देते हैं, फिर उसको नया करके उसमें सेंसर डाल देते हैं. अब वो बिजनेसमैन चाहे तो एक बार ही सब कुछ डाल सकता है, ही नोज दैट, बट ड्यू टू डिमांड क्रिएशन अब एक ही बार वो सारे इस चीज में हाँ, प्रॉफिट कमाने के लिए अगर एक ही बार वो सारी चीजें एक ही मोबाइल फोन में डाल देगा तो प्यारे बच्चों फिर कौन खरीदेगा उसको. वाई यू आर, फिर आपको नई नई प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत ही क्या है. और आज के डेट में देर इज रियली टू मच कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता, too much cut throat competition is there. So I was just we are discussing about the entrepreneurship development process, EDP. So there are 5 steps in this. First is discovery. Discovery of it, it's not discovery TV, it's a discovery of new idea, न्यू थिंग. मे बी एक डाइवर्सिफिकेशन होता है, एक एक्सटेंशन होता है. या तो चीज पहले से मार्केट में है उसको एक्सटेंड कर दो. अब मोबाइल का फोन रेडमी का आता है, आप मोबाइल के कवर बनाने स्टार्ट कर लो. अब देखो, अब जो मोबाइल है, अब मोबाइल फोन वाले अपने मोबाइल्स पे ग्लासेस लगा के नहीं देते, बट आपको पंजाब में कई दुकानों पे ग्लासेस लग जाएंगे, बिकॉज एडिशन करना है चेंजेस में तरह तरह के. अब वो रिंग्स लग जाती है मोबाइल फोन के साथ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन बिकॉज अभी इस टाइम आप लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है. तो सबसे पहले डिस्कवरी होती है, फिर उसी के बेस पे एक बिजनेस प्लान डेवलप होता है. बिजनेस प्लान डेवलप होता है क्यों? क्योंकि बिना प्लानिंग के तो कुछ नहीं होता है. व्हाट इज ए प्लानिंग? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom it is to be done, and when it is to be done. So I think I am speaking too much fast. No issue, you may grasp. If I speak too much now, too much fast, then your mind will divert yourself. Could just grasp that what the sir is saying. So again, I am saying for sake of your convenience, there is a three options here. You may just click on three dots, and there is the option of turn on captions. And you may just turn on captions, and whatever I will speak in English, it will automatically written here. So there is a no confusion. So, dear students, third is resourcing. The first step is discovery. Second is developing a business plan. Third is resourcing. Resourcing is इसके लिए. You have an idea, but you need some money, and you know ये money is the money is the backbone, also blood of the business. Some people rightly said that कि money is the blood of the business. Blood, in our nerve system, blood has been circulated. बट उसी में क्या होता है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है, फिर उसको मैनेज करना होता है कंपनी को, फिर हार्वेस्टिंग. सो 5 स्टेप्स होते हैं वेन एवर यू गॉट द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन अबाउट ईडीपी. बट व्हाट इज अवर करंट एजुकेशन? करंट एजुकेशन इज जस्ट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन. द पर्सन, इफ आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हाई यू स्टडी, why you are studying EDP, why you studying entrepreneurship development. 99.9% students from you will only say that sir, we have to pass the examination of ED, so that's why we are studying. We have to make our 75% attendance, that's why we are coming, otherwise we haven't any interest in this topic. Because the person who wants to do a police job, the person who wants to do a bank job, उसको EDP क्यों पढ़ना? ये हमारे इंडिया में बैकग्राउंड, जो हमारे को बनना है हमारे को वो पढ़ाया नहीं जाता है. हाँ, अगर आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, पीजीडी बनना है, टीजीडी बनना है, तो यू मस्ट बी वेल नोन अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स. बट अब बचपन में हमारे को हिंदी सिखाई जाती है, संस्कृत सिखाई जाती है. मुझे तो ज्योतिषाचार्य बनना ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रीडिंग संस्कृत. तब भी 8th 9th 10th वी यूजुअली स्टडी संस्कृत. तो वो संस्कृत कहाँ काम आई? आज कहीं भी काम नहीं करी. ज्योतिषाचार्य तो मुझे बनना ही नहीं है. सो ईडीपी में क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट के साथ अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो वो ये पूरी नॉलेज देता है बिजनेसमैन की. सो नाउअडेज स्टार्टअप ऑप्शन हैज बीन देयर. व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप होता है कि हाँ, थोड़ा सा पैसा किया, चलो मैं मार्केट में एंटर होता हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in our country, like Prime Minister Shri Narendra Modi ji, uh,
they really boosting the entrepreneurship sector. You know, when there was a lockdown in last year, many incentives have been only for MSME, micro, small, and medium enterprises. Although Government of India launched Startup Indian campaign to encourage entrepreneurship in India's young generation, who, despite being skilled and able to launch their own ventures, become dependent upon various types of jobs and remain underemployed. India, as India, as the youngest nation in the world and huge overall population, has one of the largest consumer base in the world. For every unique need of every segment of population, there is an opportunity for new venture. You must try for a new opportunity. Some people in you just doing business, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क आगे से आगे नेटवर्क बना रहे हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रही है, एफिलिएशन मार्केटिंग कर रहे हैं, काफी कुछ है. बट येट सम पीपल्स आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम इन mobile phone, other things. Each and every components were there. Why are you not focusing? So we were discussing the role of startup. Startup means a startup is an entity that is headquartered in India, which was opened less than 7 years ago and has an annual turnover less than rupees 25 crore. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब हम शिक्षा मंत्रालय भी बोलते हैं, Department of Science and Technology have partnered in an initiative to set up 75 startup sports hubs in National Institute of Technologies. अब लोग NITs, IITs में क्यों नहीं पढ़ते? आप आपने 10th के बाद क्यों आपको IIT नहीं पसंद आया? अब मान लो जिसने प्लम्बर ही बनना है, जिसका इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे एक आई वांट टू बी अ गुड प्लम्बर, या आई NITs and I NIT and IITs, I know they are different. मैं बोल रहा हूँ कि IITs में तो खैर बीटेक वगैरह होती है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में वो आपको छोटे छोटे वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं डेट प्रोवाइडिंग यू वेरियस टाइप्स ऑफ, जैसे पॉलिटेक्निकल कोर्स कहाँ होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं उसके लिए. बट व्हाट इज द रोल ऑफ द पीपल? अब हमारे को पता है कि जो काफी लोग 10th के बाद सीधा पॉलिटेक्निकल कोर्सेज में चल जाते हैं, प्लम्बर का कोर्स करते हैं, आराम से डिग्री ले लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं 3 साल का, देन वहीं से उनको इंटर्नशिप के थ्रू जॉब मिल जाती है, फिर उनको स्किल आ जाती है उस चीज में. किसी ने इलेक्ट्रिशियन बनना है तो बड़ी अच्छी इलेक्ट्रिशियन की स्किल्स आ जाएगी, कार मैकेनिक बनना है, ऑल्दो की कार बाकी में डिग्रीज भी चाहिए बट इतनी स्किल्स नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स काफी आ जाती है. थ्योरेटिकल तो कहाँ आएगी, उसके लिए तो फिर आपको बीटेक करनी पड़नी. बीटेक एरिया सारा इसी का होता है. बट लोग करते ही आजकल ये है, बिकॉज जो वो लोग उनको लगता है कि यार कौन इतना आगे करेगा. अब कुछ आपको पता है कि फेसबुक है, फेसबुक के जो मालिक है वो खुद 8th फेल है, मार्क जुकरबर्ग. बट येट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आइडिया चाहिए, एक नया बिजनेस के लिए आइडिया चाहिए. इफ आई टॉक अबाउट द लार इन लास्ट 2 and 3 years, तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल सरप्राइज दैट in last 2 and 3 years there has been increase in startup in versatile areas: retail, food delivery. फूड डिलीवरी देखो, जोमेटो है आज. आज जहां पर लोग रोजगार नहीं मिलता तो जोमेटो बोलते हैं, ही हैव योर पर्सनल व्हीकल? यस, आई हैव अ पर्सनल व्हीकल. Are you free from 8 to 10 p.m.? Yes, I am free from 8 to 10 p.m. And then why you are not joining us? अब एक टिफिन बॉक्स में कितना पैसा कमा लेते हैं अगले? अगलों के 2 घंटे में 1500 से 2000 रुपये कमा लेते हैं. बट फिर कंसल्टेंसी की सर्विसेज आती है. कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल एक एफिलिएशन मार्केट चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है अभी. लोग मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, एक ही आप ये मेडिकल डोज खाओ, ये आपके लिए बेटर है, ये खाओ. वो जैसे वो शुरू शुरू में होता था, प्रचार करते हैं, जैसे जीवो कंपनी है. जीवो कंपनी के बाद और भी है, स्वदेशी कंपनी होती थी. व्हेन माय फादर यूजुअली इन्वेस्ट इन दैट कंपनी एंड वी यूजुअली प्रोडक्ट ऑफ स्वदेशी. सो आई नो, आई रिमेम्बर माय चाइल्डहुड. डिलीवरी सर्विसेज, फिटनेस के लिए काफी कुछ होता है, तो ये स्टार्टअप्स है. इससे पहले इंडिया में इतना कुछ नहीं दिखा था. आज की डेट में आपको नई तरह तरह के रोजगार अवसर मिल जाएंगे इंडिया में. On an average, 800 startups are born every year. Startups are evolving in terms of product capabilities, networking, taking calculated risk, venturing into new spaces.
दिल्ली, एनसीआर एंड बैंगलोर में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स है। बैंगलोर क्यों? बैंगलोर एक हब बना हुआ है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का। यू डोंट नो। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चीजें बैंगलोर में चले जाओ। लोग लोग साउथ इंडियाज में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। सिटी लाइक्स जयपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, जोधपुर आर विटनेसिंग इंक्रीजिंग स्टार्टअप एक्टिविटीज, बट साउथ स्टेट्स लाइक कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, they shown better results than the rest of the country in terms of their policies and implementation for startup for supporting startup. You know, in Kerala, a launch of Kerala IT mission, which focus on fetching rupees 50 billion in investment from the state startup ecosystem, is a great example. केरला ने इनक्यूबेटर स्टार्टअप बनाया था, एक विलेज ही पूरा स्टार्टअप के लिए बना दिया था इन 2012 में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऑल्सो, मध्य प्रदेश हैज कोलैबोरेटेड विद द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। हमने पढ़ा था इन अवर प्रीवियस क्लासेस में कि अगर आपको फाइनेंस की जरूरत है तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है कि जहाँ से आप फाइनेंस ले सकते हो। तो उसी में था एक सिडबी। सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। So Madhya Pradesh has collaborated with the Small Industries Development Bank of India to create a fund of rupees 200 crore। तो मध्य प्रदेश ने सिडबी से 200 करोड़ का फंड लिया था। ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप्स। आंध्र प्रदेश हैज एलोकेटेड अ 70,000 स्क्वायर फुट टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। कई कॉलेजेस में, कई स्कूल्स में, कई यूनिवर्सिटीज में पर्सन्स के लिए बाहर से इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए लोग आते हैं। स्टार्टअप के लिए आपका आइडिया लेते हैं। हाँ अभी अगर आपके पास कोई आइडिया है तो हमें दीजिए, हम पैसा लगाएंगे उस आइडिया पे। अब आपने थ्री इडियट्स देखी होगी, तो थ्री इडियट्स में आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम ऑफ द पर्सन इन दैट मूवी, बट येट आई नो कि अ पर्सन हैज दिस आइडिया, but the launching team just neglected his idea because they think why invest in yourself। वो ड्रोन बनाता है इतना अच्छा। आज देखो ड्रोन, तो पहले क्या होता था कि जब ऊपर से शूटिंग करनी होती थी थ्रू स्काई, तो आपको कितना चाहिए था आपको हेलीकॉप्टर चाहिए था। उसके लिए हेलीकॉप्टर के फ्यूल, फिर पायलट, फिर कैमरामैन, फिर हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ एक और उसका को पायलट चाहिए होता था, फिर एक असिस्टेंट चाहिए होता था वीडियोग्राफर के साथ कि वो शूटिंग के साथ उसको असिस्ट करे। कम से कम 8-9 चीजों के लिए इतना खर्चा करना पड़ता था। बट एक ड्रोन बनाया, ड्रोन ने सबकी जॉब छीन ली। स्टार्टअप आया, हाँ ड्रोन बना, फिर ड्रोन को क्या है, उसमें कैमरा लगाओ, जहाँ मर्जी उड़ाते रहो उसको, नो डीजल नो कोई कुछ, बस एक रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। तो इस नई नई जॉब्स आ भी रही है और जॉब्स जा भी रही है। हम तो सिर्फ यही बोलते हैं ना कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर आए कई लोगों की जॉब चलेगी, बट ऐसी चीजों पे कौन नहीं दिखता। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है बेटा। सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवीज इन यूट्यूब एंड जो भी है, वेस्टिंग टाइम हेयर एंड देयर, जस्ट पुट योर ऑल एफर्ट्स इन लर्निंग द टेक्नोलॉजी। मैं आपको बोलूँ, कितना आप में से कितने लोगों को एमएस एक्सेल आता है, कितने लोगों को टैली आता है, कितने लोगों को एडोब फोटोशॉप आता है। बस ये आते नहीं है, बस आप लोगों को क्या आते हैं, बस कोलाज बनाने आ जाते हैं। या फिर वो हम क्या करते हैं, वी आर लिविंग इन ए फेक लाइफ, जस्ट अपलोडिंग ऑफ पिक और वीडियो इन फेसबुक, टेलीग्राम, यू नो, इंस्टाग्राम, एंड जस्ट सीकिंग द लाइक्स ऑफ द पीपल who liked my profile pic, who not। instead of wasting your time here and there, just एक अपना ब्लॉग लिखो। मैं कई लोगों को बोलूंगा कि भाई अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दो। जो भी आपकी कोई प्रोडक्ट्स है, आप प्रोडक्ट्स बेचते हो, आप उस पे ब्लॉग लिखो, आपको फ्री में ब्लॉग लिखने के लिए मिल जाएगा। बोलते हैं ना वेबसाइट्स पे पैसा लगता है बहुत, बट आजकल तो फ्री में वेबसाइट्स बना रहे हैं लोग, ब्लॉगों से लाखों रुपए कमा रहे हैं। इवन आई एम ऑल्सो डिसाइडिंग टू राइट ए ब्लॉग। ब्लॉग लिखने शुरू कर दो। सो ब्लॉगिंग का ये फायदा होगा कि आपके जो कुछ व्यूज होते हैं, कुछ लोग अपने पर्सनल ब्लॉग्स लिखते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते हैं, एंड वेन एवर यू विल बी गेटिंग ओल्ड एंड ओल्ड, यू विल रिमेम्बर दैट कि ओनली आई वॉज अ पर्सन इन माई चाइल्डहुड दैट रॉट these blogs। So Google has declared to launch a startup on the basis of the highest votes, in which the top three startups will be allowed to join next Google Launchpad week। So there are many startups in India। So dear students, I hope you understand many things,
But again, I am saying you have also created business mind. एक सोर्स ऑफ इनकम से कुछ काम नहीं बनता। अगर हम सोशल नेटवर्क चलाते हैं तो हम सोशल नेटवर्क से पैसा कमा भी सकते हैं। वो लोग अर्न कर रहे हैं, बस हम लोगों को क्या है, वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम ऑन सोशल मीडिया। अगर आपका बिजनेस माइंड है तो टुडे सर्च इन यूट्यूब हाउ टू अर्न फ्रॉम फेसबुक, हाउ टू अर्न फ्रॉम ट्विटर, हाउ टू अर्न फ्रॉम टेलीग्राम, हाउ टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। अपने एक आइडिया शो करो, वहां से अर्निंग स्टार्ट करो। दैट्स अ लाइफ, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट वी हैव। That's why we are studying entrepreneurship development. So, dear students, thanks a lot for joining me in this session, and hope you understood what I'm saying. If you have any queries, you may turn on your mic and ask something. So, otherwise, then we will leave and have a great day. Further, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आज आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे हाउ टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया। देखो कितने के नए नए आइडियाज आएंगे। अब में एक इंटरेस्ट आएगा कि नहीं यार, मैंने भी कोई आपको कोई आइडिया, कोई यूनिक सा कंटेंट लिखो, ब्लॉग लिखना शुरू करो। मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी जो भी है, कुछ आप प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो, जस्ट राइट ए ब्लॉग फॉर इट। सो अगेन, दीपिका रानी, हैरी लड्ढर, हरसिमरन कौर, हेल्थ एंड लाइफ टीवी, अनमोल, कोमल शर्मा, परविंदर सिंह, थैंक्स a lot for joining me. Take care, and also in this pandemic, just secure your life. Use hand sanitizer frequently, wash your hands regularly, and wear a face mask, and keep a 6 feet distance from another person. So take care. ख्याल रखना अपना।